Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully done the examples of this chapter, right? Now it's time to move on to the exercise. That means we are going to discuss the questions in exercise 12.1. So I hope you have understood the formula, the Heron's formula to calculate the area. So let us just apply on that formula onto the questions in exercise 12.1, right? So you can see the question number first of this exercise here is, you can see a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A, right? So यहाँ पे पहले मैं आपको एक diagram बताता हूँ. You can see a equilateral triangle, right? So here is an equilateral triangle here, right? Now on this equilateral triangle, we know that all the three sides are equal. It is written that school ahead. So let me just write down that. So इस तरह का एक board लगा हुआ है. Now you can see which is indicating that the school is ahead from this side, right? Now इसकी side जो है equilateral triangle की तीनों, you can see that is given to us as, you can see A, then further A and A, right? So यहाँ पे you can see this is in centimeter. So let me just write that A centimeter and A centimeter, right? So यहाँ पे equilateral triangle की तीनों sides जो है यहाँ पे A given है question के अंदर. Now we have to find out the area of the signal board using Heron's formula, right? So यहाँ पे हमें particularly given है that we have to use the Heron's formula to calculate the area of this triangle, right? Now let me just tell you that यहाँ पे parameter जो है इस triangle का, that is also given to us, that is 180 centimeter, right? And also what will be the area of the signal board? So हम यहाँ पे area निकालने वाले हैं signal board का. So first of all you can see it is given that the side of equilateral triangle is A. So now you can see also the parameter is given to us as 180 centimeters, right? Let me just correct that. So यहाँ पे सबसे पहली चीज, मुझे साइड तो पता है A. Now let me just also calculate the semi parameter, that is S. So that can be calculated by half of the parameter. Now आपको पता है half कितना होगा 180 का, because parameter is 180, so इसका half क्या होगा? Semi parameter, that will be 90. 180 के टेबल 180 को 2 के टेबल पे क्रॉस करेंगे, that will be a 90. So here you can see the value of S is 90, right? So here you can see हमें अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप A, B और C तीनों ही क्या है? A सेंटीमीटर है, right? Now you can see, let me just apply on the formula here that the area of triangle by Heron's formula, you can see that is S minus A. Let me just draw this S clear, then S minus B, then further S minus C, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सभी values हैं. So let us just substitute all the values. So S की value कितनी है आपके पास? 90, then 90 minus A. A is, you can see A, then again 90 minus B. B की value भी कितनी है? A centimeter. Then you can see यहाँ पर you can see S, that is again 90 minus C, that is also A. अब यहां पर आप बात करते हैं कि A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? So वो आपको यहां पे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी. I'm going to show you how to actually calculate that, right? So here I'm going to make some space above. Now if you just noticed here that हमें यहाँ पे पैरामीटर जो है वो given है, that is 180, right? So now we know that parameter is given to us as 180 centimeter, right? Now हम parameter कैसे find out करते हैं किसी triangle का? तीनों sides को add कर देते हैं, right? That means you can see A plus B plus C is equal to 180. That is already given. अब यहाँ पे देख सकते हैं A, B और C तीनों ही already क्या है? A है. Sorry. Now मैं यहाँ पे तीनों में sides रख देता हूं. You can see B भी A है यहाँ पे, C भी A है. That is equal to 180.
Now you can see a plus a plus a, that will be 3a equal to 180, right? Sorry. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 है ये मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में, राइट? सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a एज यू कैन सी 180 डिवाइड बाय 3, सो 3 6 18 एंड 0 एज इट इज. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर. यानी ये जो तीनों साइड्स है आपके पास you can see this is also 60 centimeter, this is also 60 centimeter, and this is also 60 centimeters, right? So यहाँ पे हमारे पास तीनों sides आ गई हैं. Then let me just substitute the value of a. If I just give this as equation number first, so I'm going to substitute the value of a into this, right? So what it will be, let me just make some space. Let me just write that again. Now this implies, you can see, substituting a equal to 60 centimeter in equation number first, then we get is, so यहाँ पे area जो है that will become, you can see in the square root, now 90 as it is, then 90 minus a की वैल्यू हमने फाइनल की था 60, so यहाँ पे भी you can see 90 minus 60, then again 90 minus 60. So यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 60. So let me just now subtract that. So here you can see 90 as it is. Now 90 minus 60, that will be 30. That will be 30 and that will be also 30. Right? Now let me just rub the space here. यहाँ पे आप देखेंगे that ये 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 30. So 33 से क्या होता है 90. Then you can see you can write down this 30 as it is, this 30 as it is, and this 30 as it is, right? Now let me just make the pair here. So यहाँ पे एक 30 का पेयर बन गया, एक 30 का पेयर बन गया, right? So that means इस पेयर का एक 30 बार आया, इस पेयर का एक 30 बार आ गया. Now this 3 is alone, that will remain in the square root, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक पेयर बाहर आ चुका है. Then you can see 30 into 30. So you can see 3 into 3 is 9. Then 2 times 0. So that will be 900. Then under root 3. And the area will be in centimeter square. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो sides थी सेंटीमीटर में given थी. So that will be centimeter square, right? So this is going to be the area of this equilateral triangle जिसके ऊपर क्या लिखा था, school ahead. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैसे इस triangle का area find out किया with the help of Heron's formula, right? So that is the important thing here. Now I hope you have understood how to calculate the S, that is the semi-parameter, the half of the parameter. If it is given, just then half that value. Agar parameter nahi given, to simply add on the given 3 sides and divide it by 2. Then you know the sides and the parameter, semi-parameter, just substitute that in the formula, you will get the area of that triangle. So that was all in the first question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 2 here is that the triangular side walls of a flyover has been used for advertisements. So यहाँ पे आपको एक flyover नजर आ रहा है. Now you can see this triangular side wall of this flyover. So इस triangular side wall को, let me just tell you that they are using for the advertisements, right? So आप देखे होंगे banner या boards लगे होते हैं on the flyovers. So ये जो triangular side wall है इस flyover की, इसको using as a advertisement, right? So कोई company है जो इसको as an advertisement use करती है. You can see now the sides of the walls are, you can see given here, this is 120, this is 22 and this is 122 meters, right? So यहाँ पे triangular wall की जो हमें dimensions है वो पता है. Then you can see the advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year, right? So यहाँ पे इस advertisement लगाने का जो charge है, you can see that means the earning for, you can see जो ये wall को own करते हैं, जो कि companies से पैसे लेते हैं for their advertisement. So उनको कितनी earning हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, rupees 5,000, right? So उनको 5,000 rupees you can see per meter square के in 1 year, right? इतना चार्ज वो लेते हैं इसका, राइट? सो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूं, सो इतना सा एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं, सो इतने से वॉल के एरिया के वो कितने रुपीस ले रहे हैं, 5,000 रुपीस, राइट? नाउ
how much rent you can see for 3 months. So यहाँ पे इस पूरी triangular wall के ऊपर 3 months के लिए हमें एक कंपनी ने अगर हायर कर लिया, you can see for the advertisement. So अगर एक कंपनी इस wall को 3 months के लिए हायर कर लेती है उनसे, then you can see how much rent did it pay. So उस कंपनी को 3 months का इस वॉल का एडवर्टीजमेंट के लिए कितना रेंट पे करना होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर. सो यानी कि सबसे पहले अगर मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर वॉल का 500 रुपीज चार्ज है, रेंट है, दैट मीन्स अगर मैं इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया फाइंड आउट कर लूं पूरा, राइट? सो उस एरिया को मैं इस 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा. सो दैट विल गिव मी द चार्ज ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल, राइट? सो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा. नाउ हमें यहाँ पे टोटल चार्ज यानी कि टोटल रेंट जो आएगा वो क्या होगा, 1 ईयर के लिए है. हमें कितने के लिए निकालना है, 3 मंथ्स के लिए, राइट? सो हाउ वी विल फर्दर कैलकुलेट इट फॉर 3 मंथ्स, दैट इज द थिंग दैट वी विल सी लेटर. बट सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल, राइट? सो यू कैन सी इफ आई जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन हियर. सो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू है. इफ आई जस्ट सपोज इट एज a, b एंड c, राइट? सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 120. देन b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 22 मीटर्स. देन यू कैन सी c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 122 मीटर्स, राइट? सो यहाँ पे a b c की वैल्यू हमें पता है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. नाउ यू कैन सी द सेमी पैरामीटर, राइट? सो हमें पता है कैसे कैलकुलेट होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, यानी कि तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, दैट विल बी सेमी पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर, राइट? सो यहाँ पे तीनों साइड्स को ऐड करता हूं. यू कैन सी दैट विल बी 120 प्लस 22 प्लस 122, राइट? सो अगर मैं इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता हूं, सो लेट मी जस्ट ऐड देम फर्स्ट. सो 120 देन 22 then 122. If I just add them, so that will be 2 plus 2 4, 2 3 is 6, so that will be 2 plus 2 plus 2, that is 6, then 1 plus 1, that will be 2, right? So यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 264 divide by 2. Now let me just change the marker here first. Now reducing it at the table of 2, so 2 1 2, then 2 1 2, 2 3 is 6, 2 2 is 4. So यहाँ पे आपके पास सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 132 meters, right? Now हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू है, also the semi parameter. Then by simply applying on, you can see the Heron's formula here, right? To calculate the area. So let me first rub this. So we know the formula, the Heron's formula. So area will be calculated by, you can see s, s minus a, s minus b, s minus c, right? So यहाँ पे सभी वैल्यूज हमारे पास हैं. So I'm going to directly substitute the values here. So यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, you can see the value of s that we know is 132. Then in multiply you can see s minus a. So s is, you can see 132 minus a. What is a? That is 120 into s minus b. Again s is 132. Then minus b. What is b here? That is 22 into, you can see s minus c. So what is s here? So you can see that is 132 minus, you can see then the c is 122, right? So here we have substituted all the values. Now further if I just solve this, so यहाँ पे 132 into, now 132 minus 120, right? So 0 plus 2 is 2, then 2 plus 1, so this is 12, right? Then further if I just subtract this, so that will be, you can see 0, then 1 and 1, right? So 110. Then further if I just subtract this, so that will be 0, then 2 plus 1, and that will be 10, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको subtract कर दिया, that will get me this here. Now what you have to do is simply write the factors of the numbers, right? So what about 132? So we know that 132 is 12 into 11. You can also cross check. आप देख सकते हैं 12 into 11 क्या होता है? So 11, that will be 12, that will be 12. Then you can see 2, 3 and 1. So आप देख सकते हैं 12 into 11 क्या हो रहा है आपके पास? 132. So मैंने इसको break कर लिया 12 into 11 में. Now you can see this is 12 again. So keep it as it is. Now 110 can be written as 11 into 10. Quite easy. बस मैंने इसको break कर लिया. 11 into 10 क्या होता है? 110. Then this 10, let me just keep it as it is, right? Now let me just make the pairs.
सो यहाँ पे एक तो 12 का पेयर बना, एक 11 का पेयर बना और एक 10 का पेयर बना, राइट? सो ऑल द यू कैन सी नंबर्स आर इन द पेयर्स। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट में कुछ नहीं बचेगा, सभी बाहर आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं 12 का एक पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, देन 11 का एक पेयर है तो एक बाहर आएगा, देन 10 का एक पेयर है तो बाहर आएगा। नाउ 12 into 11 we have seen that is 132, so that will be 132 into 10, so that will be 1320, right? Then now we know that it is in meter, so that will be 1320 meter square. So यहाँ पे हमारे पास इसका एरिया आ गया कंप्लीट वॉल का, right? The triangular wall on which the you can see advertisement is going to be placed. अब यहाँ पर कंपनी को इसका 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज लग रहा है? 5000 रुपीज। सो ये टोटल एरिया जो है इसका चार्ज कितना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 5000। बट द थिंग इज कि जो कंपनी है वो इस वॉल को सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हायर कर रही है। नाउ लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक सम स्पेस। Now we know that this is going to be the area. Now we know that the cost, or you can see the rent will be better, right? So rent of, you can see, wall for 3 months. So हमें यहाँ पे 3 months के लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है वो कितना है? 5000। So 5000 इनटू, अब टोटल एरिया कितना है इस वॉल का? 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो टोटल एरिया का कितना होगा? 5000 इंटू 1320, राइट? सो ये तो हुआ टोटल चार्ज इसका। नाउ कितने मंथ्स के लिए है? 3 मंथ्स। अब यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, ये चार्ज जो था 5000 रुपीज, ये पर ईयर का चार्ज है, राइट? सो मुझे यहाँ पे इस मंथ को भी, 3 मंथ्स को भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। सो मुझे पता है कि कभी भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना तो उसको किससे डिवाइड करते हैं? 12 से, क्योंकि मुझे पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, राइट? सो जस्ट सिंपली डिवाइड द मंथ्स बाय 12, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स, राइट? सो आप देख सकते हैं 3/12 हो गया, यहाँ पे 3 मंथ्स का चार्ज हो गया। सो नाउ आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो यहाँ पे 1/4 हो गया 3 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स होते हैं, तो 1/4 क्या हुआ? 3 मंथ्स। सो आप देख सकते हैं 3 मंथ्स के लिए मैंने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया। नाउ यू कैन सी, यू कैन रिड्यूस दिस एट द टेबल ऑफ either, if I just check it that it is reducing at the table of 4 or not. So you can see 4 3 is 12, 1 remaining, 4 3 is 12 and 0. आप देख सकते हैं 4 1 is 4, then आप देख सकते हैं 13 को रिड्यूस करते हैं। So आप देखेंगे 4 के टेबल में 3 is 12 होता है, so 1 remaining, that will make 12 here. So again 4 3 is 12 and the 0 will be as it is. So 4 के टेबल में मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। Now you have to simply multiply 5000 by 330, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरोस काउंट कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4। सो यहाँ पे 4 जीरोस तो आएंगी एज इट इज। अब 33 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 5 into 3 that is 15, 1 carry, then 5 into 3, 15 plus 1, 16, right? So you can see 1 2 3 4 and 5, so 16,50,000 rupees is going to be charged for the advertisement on this triangular wall for 3 months, right? So company को यहाँ पर 16,50,000 rupees जो है पे करने होंगे to buy this wall on rent for 3 months, right? So आपने देखा कैसे हमने just with the help of Iran's formula पहले triangular wall का area calculate किया, then we already know कि 1 meter square का charge कितना था? 5000. So we have multiplied the total area with this charge. Now this was the charge for 1 year, remember that. So यहाँ पे हमें पता है कि मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ 3 मंथ्स के लिए चार्ज था, तो 3 मंथ्स का मतलब क्या हो? ईयर्स में कैसे लिख सकते हैं 3 मंथ्स को? नाउ दिस इज द टिपिकल थिंग। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आए देन द होल क्वेश्चन विल बी डम्प्ड। सो आप देख सकते हैं 3 मंथ्स है, मुझे 3 मंथ्स के लिए इस वॉल को बाय करना था, तो मैं पहले 3 मंथ्स को ईयर्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। सो मैं 3 मंथ्स को ईयर्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मंथ को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, बिकॉज मुझे पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो अब इसको ये ईयर्स की फॉर्म में हो गए 3 मंथ्स, सो दैट विल बी 1/4। So simply you can multiply the charge by 1/4, that will get you the charge or the rent for 3 months. So this is how you have to solve such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So here we are going to discuss question number 3, which is given as that there is a slide in a park.
सो स्लाइड जैसा कि आपको पता है जिसपे चिल्ड्रंस जो है स्लाइड करते हैं, यू कैन सी, जिसको हम झूला भी बोलते हैं, यू कैन सी अ स्लाइडिंग, यू कैन सी झूला यहाँ पे. सो वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बिन पेंटेड, राइट. सो आप देख सकते हैं इसका साइड व्यू से, आप देख सकते हैं यहाँ से जो चिल्ड्रंस हैं वॉक ओवर एंड देन स्लाइड, राइट. सो दिस इज, यू कैन सी काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड हियर. सो यहाँ पे आप बच्चे ऊपर चढ़ते हैं देन स्लाइड डाउन. सो इसका जो साइड व्यू है उस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. सो दिस स्लाइड फ्रॉम द साइड व्यू आपको दिख रहा है कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में है, राइट. नाउ इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, यू कैन सी. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, दिस इज पेंटेड एरिया जिसके ऊपर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर, राइट. सो यू कैन सी we know that we can find out with the help of Heron's formula, but उसके लिए हमें तीनों sides जो है वो पता होना चाहिए. Now if we check out here, you can see if the sides of the wall are given as 15 meter, 11 meter and 6. So आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 given है, so that will be 15 meters and this is 6 meters, right. So हमारे पास तीनों sides जो है वो पता है. Now we have to find out the area painted in color. That means this area, right. So quite easy question. Just what we have to do here is first write the given thing. So यहाँ पे हमें तीनों sides जो है वो पता है. Let me just write this as A, B and C, right. So let me just first write the given thing. So यहाँ पे A की वैल्यू कितनी given है मुझे, that is 15 meters. Then B की वैल्यू मैं चेक करता हूँ, that is 6 meters. Then C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 11 meters, right. So ये तो हुई sides की वैल्यू. Now talking about the semi parameter, that is S, right. So that can be calculated by simply A plus B plus C divided by 2. So मुझे पता है कि sides को plus करके पैरामीटर आता है, उसका half क्या होगा, semi parameter. So we know all the three sides. Sorry, you can see now we have to place that. So यहाँ पे 15 plus B की वैल्यू 6 plus C की वैल्यू 11 divide by 2, right. Now 15 plus 6, that will be 21. 21 plus 11. Sorry. Now 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So 32 divided by 2. So 2 16 is 32. That means the value of S is 16 here, right? In meters. अब हमारे पास A, B और C तीनों की वैल्यू है. Also the value of semi parameter, that is S. Now we know the formula, Heron's formula, that is under root S, S minus A, S minus B, S minus C, right? So let me just write that, but first let me just make some space. So now let me just apply on the formula here. So the area, you can see, you can also write that the area of painted wall, right? So that will be the area of this triangular portion. So that can be calculated by Heron's formula, that is S, S minus A, S minus B and S minus C, right? So let me just now directly substitute the values. So S की value आपके पास 16 है, you can see. Now in multiplication S minus A. So S की value 16 minus A. What is A? That is 15. Then you can see further S minus B. So what is B? That is 6. Again you can see 16 minus C, that is 11, right? So now what we have to do is simply just solve this. So you can see further, that will be 16 into 16 minus 15, that is 1. Then you can see 16 minus 6, that is 10. Then 16 minus 11, that is 5, right? Now further, let me just write them in factors. So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, so 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 into 4, that is 16. Then you can see just here, need not to write 1 because multiplying 1 will get you the thing, right? So 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. Then 10 can be written as 5 into 2 and this 5 is as it is, right? Now let me just make the pairs. So यहाँ पे 4 का एक pair बना तो 4 outside आ जाएगा. Then एक 5 का pair बना तो 5 outside आ जाएगा. Then this 2 is alone, so that will be as it is in the square root, right? Now further, if you just see here, 4 into 5, that will be 20 and this root 2 as it is. So that is in meter square. Area is always in meter square, right? So you can see this is 20 root 2 meter square, the area of the painted wall here, right? So you can see here, by simply applying the Heron's formula, we have reached
to the area of this triangular wall, that is 20 root 2 meters square. And this is what we have to calculate here. So quite easy, just you have to keep in mind how to solve the, you can see this formula here by simply substituting the values, right? So that was all in this question here.